Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today the topic of our discussion is values. I already taught about the personality. This is the second part of your chapter. My name is Muhammad Umair. Today I teach you about the importance of values. Define values, demonstrate the importance of values and contrast terminal and instrumental values. Basically, value based on your attitudes. If you want to understand the values, you must know about the attitude of the personality. You must know how to motivate others in a positive way. If someone having a negative approach, you have a potential to change his approach through motivation. Yes, you will. You can do easily. अगर कोई सोचता है नेगेटिवली किसी भी चीज़ के मुतालिक, आप उसे मोटिवेट करें और मोटिवेट करके आप उसकी जो थिंकिंग है उसे आप चेंज कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, उसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी डेफिनेट बात है चेंज हो जाएगी. पर्सनैलिटी पे तो असर होता है ना. तो इसी तरीके के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं, lay the foundation for the understanding of attitudes and motivation. That's why I already taught about the personality in my previous lecture. Today I am going to discuss the further term of this chapter is values. Value depend upon attitudes, motivations, in behavior. अगर आप ये देखना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि आप की जो पर्सनैलिटी है, आप की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे स्कोर करती हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड्स. यू मस्ट नो अबाउट हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, हाउ टू मोटिवेट अदर्स. ठीक है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जो वैल्यूज़ हैं जनरली क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं किस पे, एटीट्यूड्स पे एंड बिहेवियर पे. दैट्स व्हाई इन दिस स्लाइड इन द थर्ड पॉइंट आई मेंशन दैट कि वी कैन प्रिडिक्ट रिएक्शन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़. ठीक है, मैंने इसी वजह से इसकी थर्ड लाइन के अंदर ये पॉइंट लिखा है, ये लाइन लिखी है कि वी कैन प्रिडिक्ट रिएक्शन. हम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विच बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़. वेरी सिंपल. तो ये तीन चीज़ें जो इस स्लाइड के अंदर लिखी हैं, ये इम्पोर्टेंस हैं किस चीज़ की, वैल्यूज़ की. कि वैल्यूज़ lay the foundation for the understanding for attitude and motivation. Values generally influence attitude and behavior. We can predict reaction based on understanding value. These all are the importance of values. ठीक है, ये तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं किस चीज़ की, वैल्यूज़ की. ओके, कमिंग नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, इसके अंदर वो ये कहना चाहते हैं, एग्जेक्टिव्स भी हैं, यूनियन मेंबर्स भी हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं. आपके टॉपिक में बताया ये गया है कि डिफ़ाइन करें वैल्यूज़ को, डेमोस्ट्रेट करें इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, कंट्रास्ट टर्मिनल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़. सॉरी, अब टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल को जज किया गया है थ्रू एग्जेक्टिव्स के, थ्रू यूनियन मेंबर्स के
ٹھیک ہے, تھرو ایکٹیوسٹ کے. اب ٹرمینل اور انسٹرومینٹل کو اگر ہم ایگزیکٹوس کے حوالے سے دیکھیں, دیکھو کیا کہتا ہے وہ. ٹرمینلی بات کریں تو سیلف رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے, فیملی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے, فریڈم کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہیپینس کی بات ہوتی ہے, سینس آف ایکوالشمنٹ کی بات ہوتی ہے. انسٹرومینٹل کی بات کریں تو اونیسٹ, you are honest or not, you are responsible or not, you are capable or not, you are ambitious or not, you are independent or not. These all 5 terms indicate the instrumental values in the shape of executives. ٹھیک ہے. اسی طرح یونین ممبرس کے اندر بھی دیکھیں مینشن کیا ہوا ہے فیملی سیکورٹی, فریڈم, ہیپینس, سیلف رسپیکٹ, میوچل لو اینڈ ETC اینڈ سو آن. انسٹرومینٹل میں دیکھ لیں رسپانسیبل, اونیسٹ, ٹھیک ہے, کوریجیس, انڈیپینڈنٹ اینڈ کیپیبل. اسی طرح آپ ایکٹیویٹیز کے اندر دیکھ لیں, آپ ٹرمینل کے اندر آ کے ایکویلٹی, ورڈ آف پیس, فیملی سیکورٹی, سیلف رسپیکٹ, فریڈم. انسٹرومینٹل میں اونیسٹ, ہیلپفل, کوریجیس, رسپانسیبل اینڈ کیپیبل. یہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ آپ کو کلیئر کرتی ہیں کہ جب آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں ان دا شیپ آف ٹرمینل اینڈ انسٹرومینٹل, کہ ٹرمینل کیا ہوتا ہے اور انسٹرومینٹل کیا ہوتا ہے, ٹرمینل ویلیوز کیا ہوتی ہیں اور انسٹرومینٹل ویلیوز کیا ہوتی ہیں. Whenever you talk about the terminal values, ٹھیک ہے, you must know about the self-respect, the family security, freedom, sense of accomplishment and happiness in the shape of executives. And when you talk about the instrumental, ٹھیک ہے, you must know about the honest, responsible, capable, ambitious, independent in the shape of instrumental executives. As same as in the shape of union members, when you talk about the terminal values, when you talk about the instrumental values, you know about the family security, responsible, freedom, courageous, independent, self-respect, capable, and so on. Okay, when you talk about the terminal and instrumental in the shape of activities, when you talk about the activists of values in the shape of terminal and instrumental, you know about the equality, a word of peace, a self-respect, a freedom, how much you are helpful, how much you are honest with others, how much you are capable, how much you are courageous, how much you are responsible. These all are the values in the shape of terminal and instrumental which shape up your personality. Okay, in next slide, dominant work values in today's workforce. In this slide I have 3 authors: Boomers, Xers, Nexters 2000 to present onwards, Xers 1985 to 2000, and Boomers 1965 till 1985, and approximate current age mid 40 to mid 60s according to Boomers, and according to Xers late 20s to early 40s, according to Nexters under 30. And in the last column, the dominant work values very clearly show that how much you are successful, how much you achieved, how much you are ambitious according to Boomers, how much you are loyal. According to Boomers, you are successful, you try to achieve success, you try
to achieve your goals. You try to become loyal to your career during the age of 40s to mid 60s. But according to Axis, late 20s to early 40s, his theories said that during this age you try to balance your life. During this age you are team oriented people. During this age you dislike rules. During this age you are loyal with your relations. But according to nesters under 30, when you are under 30, your confidence is very strong. You try to get financial success. ठीक है, कि आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बड़ा इंक्रीज़ होता है जब आप अंडर 30 होते हैं. आप कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें. ठीक है, सेल्फ रिलायंट बट टीम ओरिएंटेड. जब अंडर 30 होते हैं आप सेल्फ रिलायंट होते हैं, बट मस्ट कीप इट इन योर माइंड अकॉर्डिंग टू नेक्स्टर्स, व्हेन यू आर एज अंडर 30 you are team oriented. And in last he said that you are also loyal, you are also very good with your relations. These all terms, these all supported the values which shape up your personality. ठीक है, ये इसमें सिर्फ ये बताया गया है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. मैं थोड़ा से और इजी करके बता देता हूँ कि जब बूमर्स की बात करते हैं मिड 40s टू 60s के अंदर, वो क्या करता है, सक्सेस, अचीव, एम्बिशियस, डिसलाइक, अथॉरिटी, लॉयल्टी की बात करता है अपने करियर के साथ. इस एज के अंदर अप्रॉक्सीमेट आप का जो फोकस होता है, बूमर्स तो ये कहता है कि यही कुछ है कि सक्सेस, अचीवमेंट, एम्बिशियस, डिसलाइक ऑफ अथॉरिटी, लॉयल्टी टू करियर. पर एक्सर्स क्या कहते हैं, एक्सर्स देखिए 1985 से 2000 तक वो ये कहते हैं कि 20s टू अर्ली 40s जो इंसान होते हैं वो टीम ओरिएंटेड, डिसलाइक ऑफ रूल्स, लॉयल्टी टू रिलेशनशिप, वर्क लाइफ बैलेंस, इन चीज़ों का हैबिचुअल होता है. और नेक्स्टर्स की बात करेंगे 2000 टू प्रेजेंट अंडर 30 की क्या बात करते हैं कि कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बट टीम ओरिएंटेड, लॉयल्टी टू बोथ सेल्फ एंड रिलेशनशिप, वो इन चीज़ों का है हैबिचुअल होता है. एंड दैट्स इट. तो जब ये वैल्यूज़ होती हैं आपकी, आप उसे देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बूमर्स की बात करें तो एज की जिसकी वो बात करता है उसके अंदर आपके जो एम्बिशियस है वो कुछ और है. एक्सर्स की बात करें जो उसने एज की बात की उसमें एम्बिशियस और है, 30 में और है नेक्स्टर्स के हवाले से. इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं विद टाइम टू टाइम. ठीक है, वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, एज टू एज डिफ़र करती हैं, सेम नहीं होती. आई ऑलरेडी टॉट अबाउट इन माई लास्ट लेक्चर, मैंने आपको ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में बताया है पर्सनैलिटी का डिस्कस करते हुए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है. स्कूल लेवल पे कुछ और होती है, कॉलेज लेवल पे कुछ और होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ और होती है. और वही बात वे ये कह रहे, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं. पहले आपकी प्रायोरिटीज़ में कुछ और था, अब कुछ है, डेफिनेट बात है फ्यूचर में कुछ और होगा.
ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہولینڈس ٹیپولوجی آف پرسنالٹی اینڈ کانگرنٹ آف آکوپیشنس. یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے اس میں پٹ کی ہے آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے. کہنے کی بات اس میں یہ ہے کہ پرسنالٹی کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. اگر میں بات کرتا ہوں کہ یو آر سو شائے, یو آر ٹو مچ جینون, یو آر پرسسٹنٹ, یو آر اسٹیبل, یو آر کنفارمنگ پریکٹیکل, تو کانگرنٹ آکوپیشن کیا کہتے ہیں؟ تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں اویلیبل ہیں, اگر آپ کی پرسنالٹی میں یہ کریکٹرسٹکس اویلیبل ہیں, اکارڈنگ ٹو ہولینڈس ٹیپولوجی آف پرسنالٹی اینڈ کانگرنٹ آکوپیشنس کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر پرسنالٹی میں یہ کریکٹرسٹکس ہیں تو یو آر میکینک, یو آر ڈرل پریس آپریٹر, اسمبلی لائن ورکر, فارمر. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس اویلیبل ہیں تو آپ ایک اچھے میکینک بن سکتے ہیں, اچھے میکینک بنتے ہیں, اچھے ڈرل پریسر آپریٹر بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے اسمبلی لائن ورکر فارمر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پرسنالٹی ہیونگ اے سوشلیبل characteristic, having a friendly characteristic, having a cooperative characteristic, ٹھیک ہے, you understand all the things in a good way, آپ سمجھ سکتے ہیں تمام چیزیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ. it means you are a social worker, you are a teacher, تو آپ ٹیچر ہیں, آپ سوشل ورکر ہیں. یو آر اے کاؤنسلر, کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں آپ, سائیکالوجسٹ ہیں سوری. ٹھیک ہے. کاؤنسلر جو کاؤنسلنگ کرتا ہے, جو کلینیکل جو ہوتے ہیں سائیکالوجی کے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایشو آ رہا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, پیشنٹ کو مزید بہتر کیا جائے. لیکن وہ کب ہو سکتا ہے؟ اف یور پرسنالٹی having a characteristics in the shape of sociable, in the shape of friendly, in the shape of cooperative, in the shape of understanding. You understand yourself, you understand the difficulties of others. It means you are a good counselor, you are a good clinical psychologist, you are a good social worker, you are a good teacher. دیکھیں, اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کے اندر سوشلیبل ہے, فرینڈلی آپ ہیں, کوآپریٹیو آپ ہیں, انڈرسٹینڈ چیزوں کو اچھا کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے سوشل ورکر ہیں, آپ سوشلی ورک کر سکتے ہیں, آپ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں, ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں, ایک اچھے کاؤنسلر بن سکتے ہیں. یو ول بی گڈ کاؤنسلر, okay, you will be a good clinical psychologist. اسی طریقے سے according to Holland's typology, if you having a characters in the shape of confirming, evident, practical, unimagnative and flexible, اگر یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو اٹ مینز آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں, آپ میں اکاؤنٹنٹ والی کوالٹیز اویلیبل ہیں. کارپوریٹ مینیجر بن سکتے ہیں, بینک ٹیلر بن سکتے ہیں, فائل کلرک بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ رکھتے ہیں, ایمبیشیس ہیں, انرجیٹک ہیں آپ, ٹھیک ہے, ڈومیننٹ ہیں آپ, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس بھی زیادہ ہے, ایمبیشیس ہیں, ڈومیننٹ ہیں, آپ انرجیٹک ہیں. You will be a good lawyer, you will be a good real estate agent, you will be a public relations specialist,
You will become a small business manager. اگر آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر اگر یہ کریکٹرسٹکس اویلیبل ہیں, if your personality having a characteristic in the shape of self-confident, in the shape of ambitious, in the shape of energetic, in the shape of dominant, it means you will become a good lawyer, you will become a real estate agent, you will become a public relations specialist, you will become a small business manager. And the last one, magnetive, disorderly, idealistic, emotional, impractical characteristics آپ کی پرسنالٹی کے اندر اویلیبل ہے. It means you are a good painter, you are a good musician. اچھے پینٹر ہیں, اچھے میوزیشین ہیں آپ. You are a good writer, you are a good designer in the shape of interior decorate. آپ انٹیریئر کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. I hope you understand today's lecture very clearly. If still you student have any problem, kindly ask me again and again without any hesitation. And that's the end of the second part of your chapter, and thank you very much.